Hello dear students, welcome to Amit Sir Physics class. Okay, we have started with I think electric potential and the capacitance. That is the second chapter from your NCERT textbook. Okay, already we have seen some basic concept regarding the electric potential in the yesterday's video. So basically the electric potential, it is nothing but the same like it is the characteristics of the charge. It is what characteristics or the another property of the charge. Okay, if you know about the electric potential also, you can calculate each and everything about the charge or around the charge. Okay, and one of the best thing regarding the electric potential is what it is a vector it is a scalar quantity. Okay, and you can add scalar quantity easily like your algebra. Okay, but dealing with the vector quantity, it is little bit difficult. Okay, so that's why we have to learn regarding the electric potential. Okay, and there is a definition of the electric potential is nothing but the it is the amount of work done by moving a charge from infinity to that point in the electric field of another charge. Okay, so this is what the electric potential definition, and already we have seen the unit of the electric potential, that is volt. Okay, actually it is joule per coulomb. Okay, but joule per coulomb can be written as volt. Okay, so because electric potential is defined as what work done divided by a test charge, unit charge. Okay, so work done is nothing but the joule, charge is nothing but the coulomb. So if you take this, it becomes joule per coulomb, and this joule per coulomb is known as what volt itself, and capital V. Okay, so this is what the SI unit of electric potential. Then we have seen yesterday electric potential difference. Okay, electric potential difference, and also the few things or the basic concept कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली में होता क्या है. ओके, तो उसके बारे में और थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा मैं. जैसे मान लो ये अर्थ है. ओके, इफ इट इज़ अर्थ, okay, and the earth is surrounded by the gravitational field. Okay, same way if this is the charge is surrounded by the what electric field, charge is surrounded by electric field, and the earth is surrounded by the what a gravitational field. इसके पास क्या होता है gravitational field. Okay, because it is a mass. ठीक है, ये मास है, ये क्या है चार्ज है. तो मास के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में ओके इफ़ यू टेक दिस एज मास ओके m, एंड इफ यू लिफ्ट अप टू दिस पॉइंट, देन यू हैव टू डू वर्क. ठीक है, मतलब आपको इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, बिकॉज ग्रेविटी इज पुलिंग डाउन एंड इफ द मास इज पुलिंग अपवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स यू हैव टू डू वर्क, and this work is stored in the form of what potential energy, and hence that potential energy is known as what gravitational potential energy, because you are doing a work in the gravitational field, correct? But in this case, okay, if you are bringing a charge, okay, or maybe if you are okay bringing a unit positive charge from the infinity to this point, P point. Okay, so this charge will repel. Okay, so against of this force, that is electrostatic force, you have to place this charge over here. ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसके फोर्स के अगेंस्ट आपको काम करना पड़ेगा, एंड दैट इज नथिंग बट द व्हाट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड देन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो यू कैन रिजेंबल दिस टू थिंग्स. ओके, मतलब इन दोनों को कंबाइन करके आप पढ़ सकते हो कि मास के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट. ठीक है, यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट. तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स आता है. ओके, एंड वॉट एवर द वर्क यू डन इन बोथ द केसेस, इट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ वॉट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, एंड हर एक पॉइंट पे, ठीक है, जैसे मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अलग रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अलग रहेगा. ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अलग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अलग है. ओके, एंड दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय सम इक्वेशन. Okay, so now today we will going to derive what is the electric potential at any point at a distance of r due to a point charge. Okay, but before that we will see some properties of the electric potential. Some properties of the electric potential. So make a heading as properties of electric potential. Properties of electric potential. Okay, so first and the best property is nothing but it is an scalar quantity.
it is an scalar quantity. Okay, does not have a direction. Okay, and the next property is the work done. The work done is independent. The work done is independent on path taken by charge. Okay, from moving one point to another point, one point to another point. Okay, so these are the two properties. There are so many properties, but these are the two main things. Okay, so first we will discuss, it is a scalar quantity. Okay, of course no need to elaborate it. Okay, scalar quantity which does not have any direction. Okay, it only has a magnitude. Okay, the second one is important, the work done. Okay, suppose this is the charge, positive charge q. Okay, and suppose if you take this p, okay, or you can say take this charge as, okay, okay, so let me think this. Okay, suppose okay, so there is one point, okay, p, and there is what, another point which is at infinity. Okay, and now this p point is in the electric field of another charge, मतलब इस p point के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, और आपको क्या करना है, you have to take this in test charge q naught and you have to bring this and place it over here. ठीक है, हाँ, तो जब भी आप एक चार्ज इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आते हो तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, वर्क डन. ओके, सो दैट वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन बाय दिस चार्ज. ओके, मतलब क्या होता है, ओके, देयर आर सेवरल वे यू कैन प्लेस दिस q नॉट एट दिस पॉइंट. ओके, ब्रिंग दिस q नॉट एट दिस पॉइंट, मे बी इन स्ट्रेट डायरेक्शन. ठीक है, देन वर्क डन इज नथिंग बट w1, first work done. Okay, you can bring this charge and place it over here like this. Okay, so this is what the second path, hence it is work done 2. You can bring this charge and place it over here in this path. Okay, so this is nothing but the third path, second path and the first path. So work done is 3. Okay, so in each case work done will be the same. So work done w1 is equal to w2 is equal to w3, all are same, hence does not depend on the what, पाथ टेकन बाय द चार्ज. मतलब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ कैसे रखा गया इस पर डिपेंड नहीं है. इट डिपेंड्स ओनली व्हाट, इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन. इट डज नॉट डिपेंड हाउ यू टेकन दिस चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ओके, हेंस ईच टाइम द वर्क डन विल बी द सेम इटसेल्फ. ओके, सो these are the what two properties. Okay, so remember this property, and the next is we will see you can bring also this charge from infinity by moving in this direction. आप ऐसे जाओ और फिर यहाँ पे रखो, वर्क डन सेम. ठीक है, मतलब जितना वर्क डन यहाँ से यहाँ लगा उतना ही वर्क डन वहाँ से लेके यहाँ तक लगेगा सिर्फ. ठीक है, सो इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट. रिमेंबर, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड होता है. ठीक है, ये कैसे लेके आए इस पर डिपेंड बिल्कुल नहीं है. ओके, सो दिस इज द थिंग. नाउ वी विल सी the derivation, important derivation, that is electric potential due to a point charge. Okay. So make a heading as electric potential due to point charge. Okay. Important derivation. So electric potential due to a point charge, due to a point charge. Okay. In the last lecture or last topic you have derived electric field due to a point charge at point P. Okay, it is nothing but E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square. अगर ये Q है, ये R है, so what is the electric field at this point, P point, which is at a distance of R from the charge Q. Okay, so it is given by this equation. Same way, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे पोटेंशियल भी होगा. देन व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ओके, सो वी विल टेक दिस. ओके, फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम. सो कंसीडर, ओके, सो आई विल नॉट explain the each and everything, so I will straight away draw the diagram. Okay, so this is the positive charge placed at the origin O and having a magnitude of Q. इसका चार्ज कितना है, Q चार्ज है, Q कूलम. Okay, now suppose along this line joining, ठीक है, ये इन्फिनिटी है. okay, इन्फिनिटी के बाद
आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. योर जॉब इज टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द चार्ज. ठीक है, मतलब इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाला है हमने ऑलरेडी. अब इस P पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस ऑफ R इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना आपको, एक मतलब डेरिवेशन डिराइव करना है. ओके, सो फॉर दैट आई विल कंसिडर द टू अगेन पॉइंट्स. ओके, सो ये हो गया आपका A पॉइंट और ये हो गया आपका B पॉइंट. ओके, और A और B में छोटा सा डिस्टेंस है dx, छोटा सा डिस्टेंस है dx. ओके, एंड दिस A पॉइंट एंड द चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस है x. The distance between the charge and the A point is how much? X. Okay, so this is what the diagram, and you have to bring a Q naught. Okay, test charge how much? A unit positive charge, मतलब 1 coulomb. कौन सा 1 coulomb आपको चार्ज लेके आना है. ठीक है, so first if you want to find out the V, you have to know work done divided by what? Test charge. टेस्ट चार्ज तो पता है 1 कूलम. ओके, दिस इज व्हाट द डेफिनेशन. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब सिंगल. ओके, 1 कूलम. ओके, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. इट इज नथिंग बट द पोटेंशियल. हाँ, बट क्यू नॉट तो पता है, बट व्हाट अबाउट द वर्क डन? सो योर जॉब इज टू फाइंड आउट द फर्स्ट वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट. मतलब यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए आपको कितना काम करना पड़ा, ये आपको निकालना है. दैट इज नथिंग बट द वर्क डन, एंड दैट वर्क डन इफ यू प्लेस इट ओवर हियर, क्यू नॉट विल बी 1 कूलम. यू विल गेट द डेफिनेटली द एक्सप्रेशन. ओके, सो यू हैव टू डिस्क्राइब, कंसिडर अ पॉजिटिव चार्ज Q. ओके, प्लेस एट द ओरिजिन O. ओके, लेट अ पॉइंट P is at a distance of R from the charge. Okay, so consider positive unit positive charge, test charge 1 coulomb. Okay, place it at the infinity. Okay, now consider the point A and B. Okay, at a distance apart from each other at a distance of dx. Okay, so first, okay, I will write it down here. Your job is now to find out the work done first. Okay, so bring a test charge from infinity to point A. इन्फिनिटी टू पॉइंट A, मतलब क्या करना है आपको? पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ये चार्ज को लेके आना है, ऐसे आपको लेके आना है. ओके, सो इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, and if electric field is 0 then F is equal to what? 0. No electrostatic force. Okay, हाँ, but this A point is in the electric field of this charge. ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स भी होगा. ओके, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स फोर्स. ओके, सो व्हेन यू टेक दिस चार्ज एंड प्लेस इट ओवर हियर, ओके, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on Q naught is given by, okay, given by मतलब ये चार्ज आपने Q naught यहाँ पे रखा. So what is the force between these two charges plus Q charge, that is capital Q and Q naught. Okay, so it is given by the what? Electrostatic force, that is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 and Q2. Okay, already you have placed this Q1 and Q2. लेकिन Q1 क्या है? Q, and Q2 क्या है? 1 coulomb and divided by what? The distance between them. So what is the distance between them? It is nothing but the x square itself. Okay, so make this equation number 1. Okay, so now the work done in moving a small distance dx, a small distance dx. Okay, so now once you place it over here A, you have to find out the force. Okay, and that force is given by this equation. मतलब ये चार्ज अगर आपने यहाँ पे रख दिया, so the force is this much is applying by this charge. Okay, now you have to move the charge, that single charge from A to B, a small distance. ठीक है, वो जो चार्ज आपने यहाँ पे रखा है उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक उसको मूव करना है. तो हर एक पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा, इतना ही फोर्स लगेगा. और अगर फोर्स लग रहा है और आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dx, देन वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो हाँ, लेकिन अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी कितना लगेगा आपको? स्मॉल. ओके, सो देयरफॉर आई विल राइट इट डाउन एज dw इज नथिंग बट द फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट.
multiply by what? Displacement. Okay, so dw is equal to what? Force is equal to what? 1 upon 4 pi epsilon naught. So q1 multiply everything, you will get 1. So q divided by 4 pi epsilon naught, okay, and x square into dx. Okay, because displacement is nothing but the small distance dx, how much you displaced the charge from a to b. So from a to b displacement is how much? Dx, and this is nothing but the force and this is displacement. Okay, so now अगर a to b इतना छोटा सा डिस्टेंस मूव करने के लिए आपको इतना वर्क डन करना पड़ रहा है, तो इन्फिनिटी से r मतलब इन्फिनिटी से यहाँ तक अगर आपको चार्ज मूव करना है तो कितना वर्क डन? ओके, सो यू हैव टू सिंपली इंटीग्रेट. ओके, सो द वर्क डन इन bringing a charge from infinity to r. ओके, इन्फिनिटी टू मतलब इस पॉइंट पे p पॉइंट पे रखना है. अगर छोटा सा वर्क डन इतना मिल रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल वर्क डन चाहिए, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट द व्हाट v इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय अ टेस्ट चार्ज. ओके, तो अभी आपको वर्क डन निकालना है. ओके, सो हेंस इंटीग्रेटिंग the equation 2. Okay, equation 2. So I will mention this as equation number 2. Okay, equation 2 between the limit infinity and r. Okay, lower limit infinity, upper limit r. Okay, so integration of dw is equal to what? Integration of infinity to r, it becomes what? This equation. So q divided by 4 pi epsilon naught, okay, 1 upon x square into dx. ओके, हाँ, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे रह गया. ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन जो है, ओके, तो वो नेगेटिव लिखूँगा मैं यहाँ पे, नेगेटिव माइनस. ये क्या होगा? माइनस. तो ये भी यहाँ पे भी माइनस बाहर ले लूँगा मैं. अच्छा, माइनस क्यों? ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट मतलब a से b तक डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ हो रहा है. सो दिस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, हाँ, लेकिन ये चार्ज, इस चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ पे लगा रहा है? उस तरफ. सो फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन. फोर्स इज व्हाट? इन दिस डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, इसके ऊपर फोर्स ऐसे लग रहा है. सो बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो दैट अपोजिशन रिप्रेजेंटेड बाय माइनस साइन. Okay, so integration of this dw becomes w. Okay, and then minus, as it is, take out the constant. Q constant 4 pi epsilon naught will be constant, so it becomes q divided by 4 pi epsilon naught. Okay, and integration of infinity to r 1 over x square into dx. Okay, हाँ, तो अगर इसका इंटीग्रेशन आप सॉल्व करोगे 1 over x square, ठीक है, सो वी नो द रूल x रेस टू n. ये क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx इज इक्वल टू व्हाट? x रेस टू n प्लस 1 एंड n प्लस 1 होता है. ठीक है, तो इसको ही हम देख के इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग. ठीक है, सो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इट कैन बी रिटर्न एज इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू माइनस 2, and x raised to minus 2 is nothing but what? 1 upon x square. Okay, and this becomes dx. So it becomes what? X raised to minus 2 plus 1 and it becomes minus 2 plus 1. Okay, so इसको सॉल्व करेंगे तो x raised to minus 1 divided by minus. Okay, हाँ, x raised to minus 1 कैसे लिखते हैं हम लोग? 1 upon x and this minus, इसका माइनस ऑलरेडी वहाँ पे है. ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? माइनस 1 अपॉन एक्स. ओके, सो इंटीग्रेशन, सो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? माइनस क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो इट बिकम्स माइनस 1 अपॉन एक्स infinity to r. Okay, now instead of this x you have to place lower limit and upper limit. So work done is equal to what? Minus q divided by 4 pi epsilon naught. Okay, one time minus it is. Okay, so otherwise minus minus become plus. सिंपली ये माइनस प्लस हो गया तो बचा क्या? सिर्फ 1 अपॉन इन्फिनिटी, सॉरी अपर लिमिट पहले r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी. ओके, सो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज नथिंग, इसकी तो वैल्यू कुछ भी नहीं है. ठीक है, मान लो 0. ओके, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? q, ये 1 अपॉन r ही मल्टीप्लाई है, सो q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r. सो दिस इज व्हाट योर वर्क डन. ओके,
Now once you get the work done, by definition of electric potential, okay, so we know V is equal to what? Work done divided by test charge, okay. But here it is Q naught is equal to what? 1 coulomb. And work done already calculated. Therefore if you place all the value, you will get equation becomes 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R. So this is what the derivation for potential due to a point charge at a distance of R. Okay. And 1 upon 4 pi epsilon naught, already you know, that is 9 into 10 to the power of 9. Q is nothing but the charge, and the R is nothing but the what? Distance from the charge to that point. Okay. So you can see here in this derivation, okay, so I will rub this. Electric field due to this charge is equal to what? 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square. Okay, and potential is given by V is equal to what? 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R. Okay, it means electric field is inversely proportional to R square and potential is inversely proportional to 1 over R. Okay, so this is what the derivation important for 5 marks. Okay, ये derivation क्या है? Important for 5 marks. तो बस आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है. तो अभी आज हमने वीडियो में क्या देखा? द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड द वर्क डन इज व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑन द व्हाट पाथ, हाउ यू taken the charge from one point to another point. It only depends on the what? Initial point and the final point. And then we have taken the derivation for the electric potential due to a point charge at a distance of r. जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. ओके, एंड देन दिस इज व्हाट द फाइनल इक्वेशन यू गॉट. ठीक है, तो ये हमने क्यों करना पड़ा? क्योंकि पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है? वर्क डन डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज. ठीक है, हाँ, तो पहले हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. सो हाउ मच द वर्क डन फ्रॉम मूविंग इन्फिनिटी टू दिस. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इन्फिनिटी टू आर. ओके, सो वंस यू गेट द वर्क डन, place it this in the equation. Q naught will be 1 coulomb, so work done as it is. So rearrange this term, you will get potential is equal to what? 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R. Okay, so this is the derivation, important derivation. Okay, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करो, लाइक करो. ठीक है, क्योंकि जितना मैं व्यूज़ देख रहा हूँ उतना सफिशिएंट नहीं है. ठीक है, तो थोड़े बच्चों में भी देख नहीं रहे होंगे, पता नहीं. ठीक है, तो उनकी मर्जी. सो आई विल नॉट फोर्स यू. ओके, तो लेकिन लॉकडाउन में भी करोगे आप टिकटॉक या फिर यहाँ वहाँ अगर आधा घंटा 1 घंटा आप इन्वेस्ट कर सकते हो. ठीक है, तो उनका आउटपुट तो कुछ नहीं होगा. ठीक है, आउटपुट विल बी ज़ीरो. ठीक है, तो हाँ, ये पढ़ने से कुछ तो होगा. ठीक है, एटलीस्ट 10% तो नॉलेज आएगा कि ये कैसे आया, क्यों आया. ठीक है, तो डोंट स्टॉप द लर्निंग. ठीक है, एट एनी कॉस्ट. डोंट स्टॉप द लर्निंग एट एनी cost. Okay, so see you in the next lecture. Okay, with some next concept. Okay, इसके बाद एक डेरिवेशन है, वो भी इम्पोर्टेंट है. इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, सो टिल देन, ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.